Hey everyone, welcome back to Nile's video with your trainer Shreya. And in today's video, we are going to learn some idioms and phrases which are related to some prosperity and wealth. Just as the festival of Diwali embraces you with abundance and prosperity, these idioms and phrases related to wealth will embrace you with fluent English and will help you to speak English in a better way. So let's learn that. The first is prosperity knocks at the door once. Meaning is opportunities for success come rarely. कामयाबी के मौके कम ही आते हैं. For example, I advised him to seize the chance because prosperity knocks at the door once. मैंने उससे मौके का फ़ायदा उठाने की सलाह दी क्योंकि कामयाबी के मौके तो कम ही आते हैं. The next is strike it rich. Simply means to become very wealthy or successful, often unexpectedly. अचानक से बहुत ज़्यादा अमीर या सफल बनना. For example, after years of hard work, he finally struck it with his successful business venture. सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अपने सफल बिजनेस वेंचर से वो अचानक से कामयाब और अमीर बन गए. The next is rags to riches. Simply means to go from a state of poverty to one of wealth or success. गरीबी से अमीरी या फिर कामयाबी की ओर जाना. हिंदी में तो सुना ही होगा आपने, रंक से राजा तक या ज़मीन से आसमान तक. For example, her story is too inspirational, going from rags to riches through hard work and determination. कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के जरिए गरीबी से अमीरी तक पहुंचने की उसकी कहानी वास्तव में बहुत इंस्पिरेशनल है. Let's move to the next one. Living high off the hog. Let me repeat it. Living high off the hog. It means living a luxurious and a comfortable lifestyle. एक शानदार और आरामदायक lifestyle जीना. For example, after the inheritance, they started living high off the hog, traveling to exotic places. बोलते हैं विरासत के बाद वो एक शानदार और आरामदायक लाइफस्टाइल जीने लगे, बहुत अब्रॉड दूसरी जगहों पर सफ़र करने लगे. नेक्स्ट इज रोलिंग इन डो. इट सिंपली मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, बीइंग वेरी वेल्दी, बहुत सारा पैसा होना, बहुत अमीर होना. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर हिज सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर अक्षय वॉज रोलिंग इन डो. अपने सफल बिजनेस वेंचर के बाद अक्षय बहुत ज़्यादा अमीर हो गया. The another one is silver spoon. It means born into a wealthy and a privileged family. एक अमीर और अमीर खानदान में पैदा होना. For example, Akash was born with a silver spoon in his mouth, never having to worry about financial struggles. आकाश अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ था. उसे कभी भी पैसों की दिक्कत के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो एकदम अमीर खानदान में पैदा होते हैं. The next is fortune favors the bold. Simply means taking risk can lead to success and prosperity. जोखिम उठाने से ही कामयाबी और समृद्धि हासिल होती है. For example, he decided to invest in the startup, believing that fortune favors the bold. उन्होंने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का फैसला किया, ये मानते हुए कि भाग्य ही साहसी लोगों का साथ देता है. We hope that Diwali blesses you with prosperity and abundance, not only wealth and wise, but also in terms of language and English speaking skills. We hope these phrases and idioms related to prosperity have given you plenty of ways to express yourself through these expressions. Till then, stay tuned.